So today's topic is integral calculus, and in this integral calculus we will discuss double integral and triple integral. So in double integrals we have 5 different types of problems. First one is those problems where limits are given, okay, where limits are given. Then how can we evaluate this double integral type of problem? Second one is where limits are not given but a region of integration is given, okay, where limits are not given but a region of that integral is given. Then change of order of integration. इसका मतलब ये है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स अगर इंटीग्रल dx dy की तरह दे रखा हुआ है तो आपको dy dx करना, ऑर्डर चेंज करना आपने. तो जब आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. How can we solve these type of problems? And then change of variables. Change of variables means we have given double integral problem in Cartesian form, change the problem in polar coordinate system and then solve. So how can we change Cartesian form to polar form, and then how can we solve these type of problems? Then we will discuss applications of double integral, area enclosed by plane curves by double integrals. How can we evaluate the area, okay, enclosed by closed curve by double integral, and how can we evaluate volume by double integral? This topic is very, very important. How can we evaluate this volume by double integral? Okay. Now triple integral, then we will discuss triple integral where limits are given, okay, where limits are given in triple integral problem, then what is the process of finding the value. And then next one is where limits are not given but region of integration is given. Similar type of we have second case. Then change of variables. Here change of variables means change rectangular coordinate to spherical polar coordinate system or rectangular coordinate to cylindrical coordinate system. And finally we will discuss the volume by triple integrals. तो देखिए ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है इससे वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है. जो डबल इंटीग्रल है इससे आप एरिया एज वेल एज वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, और जो सिंगल इंटीग्रल है उससे लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उससे आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो. बट डबल इंटीग्रल में लेंथ कैलकुलेट नहीं होगी, ओके, एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है. एंड ट्रिपल इंटीग्रल में एरिया और लेंथ कैलकुलेट नहीं होगी, सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है. सो नेक्स्ट 7-8 lectures we will discuss all these type of problems. Okay. So first topic today we will discuss this double integrals where limits are given, and then we will discuss those problems where limits are not given but region of integration is given. So we will discuss here 2 different kind of problems, right. So we know this definite integral, we know this term, okay. What is definite integral? Integral a to b fx dx is defined as the limit of the sum fx1 delta x1 plus fx2 delta x2 plus and so on plus fxn delta xn, and in compact form this sum is represented by this summation r1 to n fxr delta xr. Okay. The limit of this sum is nothing but definite integral. तो वो जो limit है वो क्या है? Where limit is n tend to infinity, and as n tend to infinity, consequently these small width lengths delta x1 delta x2 tends to 0. So this one is single integral, okay, definite integral a to b fx dx. तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम आपने इससे पहले कर रखी है, सिंगल इंटीग्रल क्या होता है. ओके, नाउ इन दिस केस दिस वन इज x axis, this one is x axis, this one is y axis, this one is a curve y is equal to fx, y is equal to fx. Okay, तो हमने क्या किया, this x1 is equal to a, this one is a line, straight line, xn is equal to b, this one is a straight line. हमने क्या किया, इस पूरे रीजन को हमने डिवाइड किया n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में. Okay, this one is first strip, this one is second strip, this one is third strip, then fourth, fifth and so on, nth strip. Okay, and then consider this type of area, this type of area.
क्लियर? अब देखिए जब आप इस टाइप का सम कंसिडर करोगे fx1 डेल्टा x1, दिस मीन्स दिस टोटल, this one is the area of this one, this delta x1 fx1 delta x1. Similarly fx2 delta x2 means this type of this area. ओके अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि इस कर्व के नीचे का एरिया और इस एक्स एक्सिस के ऊपर और इन दो लाइंस के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस से, तो हो क्या रहा है, ये जो एरिया है ये आपका एरिया एक्स्ट्रा है, ये एरिया एक्स्ट्रा है, ये एरिया आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, क्लियर? तो ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसी स्ट्रिप को दो भागों में डिवाइड कर दूं, सपोज मैं इसको इस ढंग से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये और ऐसे करके, तो ये जो एरिया है, ये जो एक्सेस में एरिया था, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ाता जाऊंगा, ये जो एरिया है वो जो एग्जैक्ट एरिया आना चाहिए उस तरफ कन्वर्ज करेगा, क्लियर? So the limit of this sum is nothing but integral a to b fx dx. So this means that this one is the area bounded by y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b, and this x axis. Clear? So integral fx dx. So fx dx means fx dx is area of this strip, y height and dx width. So y dx means fx dx. This one is the area of this strip. Now this strip slide from this point to this point, this line to this line, means from x is equal to a to x is equal to b. So this one is the area bounded by x axis, x is equal to b, x is equal to a, and y is equal to fx. So that one is the single integral, okay? And double integral is the counterpart in two dimensions, okay? So we will discuss double integral. So a double integral is its counterpart in two dimensions. Clear? What happened in double integral problem? Let us suppose this one is x-axis, y-axis, this origin, right? So consider a function fxy. Consider this type of function of f of x and y of independent variables xy defined at each point in the finite region R. तो ये जो function हम consider कर रहे हैं fxy of two independent variables x as well as y. Okay, so this function is defined at every point within this region, of the xy plane. Now divide this R, divide this region R into n elementary areas. So divide this region R into n elementary areas like this: delta A1, delta A2, delta A3, and so on, delta an-1, delta an, delta AR. Okay, so we divide this R into n elementary areas, delta A1, delta A2, and so on, delta An. And let us suppose XR, YR, this point, be any point within the rth elementary area, delta AR. So that one is the geometry of this problem to define this double integral. Okay? So consider a function which is defined at each and every point within this region R, right, of the xy plane, and divide R into n elementary areas, delta A1, delta A2, delta An, and let us suppose x or y or be any point within this rth elementary area. Okay? Now consider this type of sum. Fx1 y1 delta A1 plus fx2 y2 delta A2, fxn yn delta An. This means consider this type of sum. और सिंगल इंटीग्रल में हमने कैसे सम कंसिडर किया था? सुमिशन एफ एक्स आर डेल्टा ए डेल्टा एक्स आर. यहां पर क्या कर रहे हैं? एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर. क्लियर? सो कंसिडर दिस टाइप ऑफ सम. नाउ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफाइन दिस डबल इंटीग्रल? द लिमिट ऑफ दिस सम इज नथिंग बट डबल इंटीग्रल. ओके, सो राइट ऑन दिस डेफिनेशन. Definition is the limit of this sum if it exists. The limit of this sum if it exists. Limit means the number of subdivisions increases indefinitely. This means mathematically n tend to infinity. N tend to infinity. So as n tend to infinity, the small areas tends to 0. Clear? So consequently, as a result, the area of each subdivision decreases to 0. That is delta AR tend to 0. So as n tend to infinity, this delta AR tends to 0 is defined as the double integral of fx over the region R and is written as
integral over r fxy dA. Okay, so this integral over r fxy dA is nothing but double integral, and that double integral is nothing but limit of the sum. Clear? This means this integral is limit n tend to infinity delta ar tend to 0 summation r1 to n fx ry r delta ar. So this one is the definition of this double integral. Okay, तो देखिए मैं यहाँ पर डबल इंटीग्रल का साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इवैल्यूएशन पर्पस पे काम करूंगा तब मैं इसका यूज करूंगा. ओके, अगर एक बार डी यूज हो रहा है, दिस साइन डी डिफरेंशियल, ओके, तो आपने एक बार इसका यूज करना है. क्लियर? और अगर आप dx dy टाइप की टर्म लिख रहे हो, दो बार d यूज कर रहे हो, तो डबल इंटीग्रल का साइन यूज कर रहा है. सो हियर वी यूज dA, सो इंटीग्रल ओवर r fxy dA is equal to limit of this. This one is double integral. But for the purpose of evaluation, this result is expressed as repeated integrals, and that repeated integrals can be written as integral over r fxy dA is equal to. So this integral is equal to double integral x1 to x2 y1 to y2 fxy dx dy. So for the purpose of evaluation, this integral can be expressed as repeated integrals. Okay, repeated integral, this first integral, this second integral. So this one is the way to express this double integral. Okay, so this one is the definition. तो पहले आप इसकी ज्योमेट्री ट्रेस करो, ज्योमेट्री में क्या, एक फंक्शन लो, and that function is defined at each and every point, and then divide that region into n elementary small areas, right, and then consider one particular type of sum, right, and then limit of that sum means as n tend to infinity, then consequently delta ar tend to 0. Okay, delta ar tend to 0, and that limit value is nothing but double integral over r fxy dA, and for the purpose of evaluation, that integral is expressed as repeated integrals like this way. Okay, now its value is found as follow. अब सवाल ये उठता है कि इसकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट करना है. क्लियर? इसकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. नाउ वी विल डिस्कस 3 केसेस. ओके, वी विल डिस्कस 3 केसेस. फर्स्ट केस इज y1 and y2 are functions of x. Okay, y1 and y2 are, suppose y1 and y2 are functions of x, and x1 and x2 are constants. Then how can we evaluate this double integral problem? That one is the first case. Second one is x1 and x2 are functions of y, and y1 and y2 are constant. Then how can we evaluate these type of integrals? And third one is when all these 4 values, all these limits are constants, then how can we evaluate these type of problems? ठीक है, तो देखिए अगर लिमिट्स आपको दे रखी हुई हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है फिर. ठीक है, जो लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर को सेट करना है, dx करना है, dy करना है, या dy dx करना है. ये डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट्स किस तरह से दे रखी हुई हैं. आपके पास कोई चॉइस नहीं है. हाँ, अगर ये लिमिट्स ना दे रखी होती, ठीक है, अगर आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा होता, जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां आपके पास चॉइस है, वहां आप dx dy भी कर सकते हो, dy dx भी कर सकते हो. बट यहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको लिमिट्स को देखना है और ऑर्डर को सेट करना है, देन इवैल्यूएट द प्रॉब्लम. ओके, सो फर्स्ट केस इज व्हेन y1 and y2 are functions of x and x1 and x2 are constants, then how can we evaluate this type of integrals? Now see the geometry. How can we evaluate this double integral problem? Now y1 and y2 are functions of x. Constant होता तो straight line होता, functions of x तो ये curved form में. So y1 is equal to function of x, this one, and y2 is equal to function of x, this one. Blue lines. Okay. Now x1 and x2 are constant. Clear? x1 and x2 are constant. So x is equal to x1 constant means line, straight line, and x is equal to x2, that one is a straight line. So this means that this one is the region of integration. This one is the region of integration. This one is the region of integration. This complete. So complete, this one is the region of integration. So over this region, evaluate this double integral problem. Clear? अब देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे. ओके, हियर fxy is first integrated with respect to y. तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम में when y1 and y2 are functions of x, then consider a strip which is parallel to y axis.
which is parallel to y axis। और ये स्ट्रिप इस ढंग से आपने लेनी है कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये उस कर्व्ड जो पाथ है उसके ऊपर आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऐसी स्ट्रिप कंसीडर नहीं करनी है, आपने इस टाइप से कंसीडर को स्ट्रिप करना है। ओके, सो द एंड पॉइंट्स लाइंग, एंड पॉइंट लाइंग ऑन दिस these curved path, and this one is P and Q. So fxy is first integrated with respect to y, keeping x fixed, keeping x fixed between the limits y1 and y2। तो जो अंदर का इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने x को फिक्स करना है, क्लियर, एंड इवेलुएट द इंटीग्रल बिटवीन दीज लिमिट्स y1 and y2, and then the resulting expression is integrated with respect to x within the limits x1 and x2। this means that this y1 to y2 fxy dy, okay, and outside dx integral x1 to x2। तो पहले आपने इनर इंटीग्रल को सॉल्व करना है और फिर आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। हियर y1 and y2 आर फंक्शंस ऑफ x। तो जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट वन इज अ फंक्शन ऑफ x, क्लियर, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपने आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में स्ट्रिप को आपने लेना है पैरेलल टू y एक्सिस। सो दिस dy so means strip is parallel to y axis। Suppose these two values are functions of x, right? This means y1 and y2 are given, okay, y1 and y2 are given, and that one is a function of x, right? Then integrate with respect to y first and then with respect to x, clear? तो इस टाइप को आप ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप से प्रॉब्लम इन लिमिट्स को आप चेक कर लो and accordingly draw a strip, okay, arrange a strip which is parallel to y axis, clear, and then we can solve. Now what is the geometrical interpretation of this whole result? So where the integration is carried from inner integral to outer integral, तो आपने पहले अंदर का इंटीग्रल सॉल्व करना है, फिर इसको बाहर का इंटीग्रल को सॉल्व करना है. Now what is the geometrical illustration with figure? Here AB and CD, this AB and this CD are two curves whose equations are y1 is equal to f1x and y2 is equal to f2x, and PQ is this vertical strip with width dx. The inner rectangular integral, this inner rectangular integral means the integration is along one edge of strip PQ. तो ये जो inner integral है इसका मतलब ये है कि जब आप इसको solve कर रहे हो, ये जो solve हो रहा है ये इस strip के ऊपर solve हो रहा है, ये इस strip के ऊपर solve हो रहा है. Okay, so inner integral means integration over this strip, right? And after that this strip slide from this line to this line, clear, means x1 to x2, so x1 to x2. Okay, so inner integral means this integration over this strip, and second integral means this strip slide from this line to this line. So in this way you can evaluate this double integral problem. Okay, and the whole region of integration is area ABCD. तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये एरिया इक्वल होता, एरिया डिफाइन नहीं होता. सिंगल इंटीग्रल में वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, बट डबल इंटीग्रल में ऐसा नहीं है. हाँ, अगर फंक्शन एक्स वाई जेड एक्स वाई एफ एक्स वाई अगर 1 हो तो फिर ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, बट फंक्शन एफ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, वाई क्यूब प्लस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये एरिया डिफाइन नहीं करेगा, बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस एरिया. ओके, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस एरिया. Now second case, when x1 and x2 are functions of y and y1 and y2 are constants, okay, then geometrical representation look like this way. So here this x1 is a function of y, right, x2 is a function of y, right, and then y1 and y2 are constants. तो मैंने पहले कहा है कि आपने एक ऐसी स्ट्रिप लेनी है जिसके एक्सट्रीम एंड जो है वो कर्व पाथ के ऊपर स्टैंड करे, राइट. सो वी कंसीडर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप, ओके, from P to Q. Okay, so this means this strip is parallel to x-axis. So when we consider strip parallel to x-axis, this means you have to integrate the given integral double integral problem with respect to x first and then with respect to y. Okay, so fxy is first integrating with respect to x because strip is parallel to x-axis, right, keeping y as fixed within the limits x1 and x2, and resulting expression is integrated with respect to y between the limits y1 and y2. That is, so first solve this inner integral, then outer integral. So inner integral means integrations over this strip,
and this strip slide from this line to this line to cover whole region of integration, right, from y1 to y2. So y1 to y2, so this y1 to y2, okay, and then we cover whole complete area of integration, complete region of integration. Clear? So in this way you can solve this type of problem. So again integration carried from inner to outer integral. तो देखिए जब आप इनर इंटीग्रल को सॉल्व करोगे x1 एंड x2 आर फंक्शन ऑफ y, क्लियर, तो इनर इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ y, राइट, देन सॉल्व outer integral, right, and on the similar line geometrical illustration is here AB and CD are curves, x1 is equal to f1y and x2 is equal to f2y, and pq is horizontal strip of width dy. Then the inner rectangular integral, this indicates the integration is along one edge of this strip from P to Q, and while the outer rectangular correspond to the sliding of this strip, means this strip slide from this line to this line, clear, sliding of this strip from AC to BD, okay, and the whole region of integration is nothing but this area, clear, whole region of integration is nothing but this area ABC, ABDC, okay, ABDC, okay. Now third case, very interesting, when all the limits are constant, okay, x1, x2, y1, y2 are all constant, then what happened? Means all straight lines, right? तो देखिए यहाँ पर आप कैसे भी इंटीग्रल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, आप चाहे स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लो या पैरेलल टू वाई एक्सिस लो, ये आपके पास फिर चॉइस है, इस केस में आपके पास चॉइस है, क्लियर. सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज रेक्टेंगल ABCD as shown in the figure. So you can evaluate I is equal to x1, x2, y1, y2, fxy, dy, dx. So y1 and y2 अगर आप ऐसे लिख रहे हो, in fact these are constants, okay. अगर y1, y2 लिख रहे हो तो with respect to y, okay, and then with respect to x, ठीक है. और अगर आप स्ट्रिप डिफरेंट ले रहे हो, डिफरेंट मीन्स स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हो, रेड स्ट्रिप ले रहे हो, ठीक है. In that case, when strip is parallel to x-axis, then with respect to x first and with respect to y first, तो आप correspondence ये x1, x2 ये exchange कर सकते हो, ठीक है. अगर y1, y के साथ कर रहे हो तो y1, y2, then x के साथ करो x1, x2. अगर x के साथ कर रहे हो तो x1, x2, with respect to y करोगे तो y1, y2. इस ढंग से आपको ये करना है, okay. So in I1 we integrate along the vertical strip, okay, in this case dy, okay, and in this case we integrate along the horizontal strip P dash Q dash and then slide it from AB to CD. So inner integral means this dy means this strip, blue strip. Inner integral means integration over this strip, and this strip slide from this point to this point, this line to this line, means x1 to x2. So x1 to x2, okay, and in the similar way you can illustrate this result, okay. And then obviously if you calculate the value of this double integral problem in any manner, okay, you will get I1 is equal to I2, okay. By both the processes the value you will get the same, okay. Thus the constant limits, it hardly matters whether we first integrate with respect to x and then with respect to y or vice versa. But accordingly आपको ये जो लिमिट्स है वो एक्सचेंज करनी है, ये जो ऑर्डर है इसको भी एक्सचेंज करना है, ठीक है ना. ऐसा नहीं होगा कि आप dy करो और यहाँ x1, x2 रखो, ये नहीं होगा, ठीक है. अगर आप dy कर रहे हो तो वो वैल्यूज एज इट इज रहनी चाहिए, उनको एक्सचेंज ऑलरेडी करना, अपने आप से उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके. So here we will discuss those problems in double integrals where limits are given, and by observing the limits we will decide the order of integration. तो आपने क्या करना है, जो लिमिट्स दे रखी हुई हैं उनको ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंगली फिर उसका ऑर्डर सेट करना है, और ऑर्डर सेट करने के बाद उसको सॉल्व करना है. पहले इनर इंटीग्रल को सॉल्व करना है एंड देन सॉल्व आउटर इंटीग्रल, राइट. सिंस द लिमिट्स आर गिवन, सो रफ स्केच ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. देखो जब भी डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे आपको लिमिट्स चाहिए, लेकिन जब आपको लिमिट्स दे रखी हुई हैं तो रफ स्केच बनाने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, जब लिमिट्स ना दे रखी हो, ओनली रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन, right, then rough sketch of the problem is essentially required for evaluating the limits of integration, okay. Now solve this type of problem, okay. 1 2 1 3 xy square dx dy. अब आपने कुछ भी ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ये जैसे लिखा है वैसे ही रहने देना है. dx dy आपने dy dx नहीं करना है, dx dy. तो एक तो मेथड ये है कि आप इसी ऑर्डर को 1 3 xy square dx ये लिया,
and then outer is with respect to y. इसको solve किया, जब आप इसको solve करोगे as usual, okay, you will get 28/3. क्लियर? और अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो ये लिमिट्स यहां आ जाएगी, ये लिमिट यहां आ जाएगी, dy इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट? क्लियर? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को वैसे ही आपने ट्रीट करना है, राइट? नाउ वन मोर प्रॉब्लम, इवेल्युएट 0 to 5, 0 to x square, x square plus y square dx dy. इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको लिमिट्स देखना है और लिमिट्स को देख करके आपने उसका ऑर्डर सेट करना है. नाउ these two limits are function of x. Function of x, this means y1 and y2 are functions of x. y1 and y2 are functions of x. अगर y1 y2 function of x दे रखा हुआ है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट. क्लियर? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट. तो आपको जब ये इंटीग्रल सॉल्व करना तो यहां dy पहले लगाना पड़ेगा, dx बाद में लगाना पड़ेगा. आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप इन लिमिट्स को देख करके इसका ऑर्डर सेट कर रहे हो, राइट? So when you solve these type of problem, this type of problem is look like this way. Okay, 0 to x square, 0 to 5. This, so these two limits are functions of x. This means y1 and y2 are given, and that one is a function of x. So integrate with respect to y first. So solve this inner integral, right? And then outer integral, you will get the required result. You will get the 18880.2 nearly. That one is the answer of this double integral problem. तो इसमें कोई मुश्किल काम कुछ नहीं है, ठीक है? आपने बस लिमिट्स को देख करके ऑर्डर को सेट करना है और बाकी इनर इंटीग्रल को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सिंगल इंटीग्रल को आप सॉल्व करते हो, राइट? एंड देन वी विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स वेयर लिमिट्स आर नॉट गिवन बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन. Okay, where limits are not given but region of integration is given. So here we will discuss those problems in double integrals where limits are not given but region of integration is given. So since limits are not given, so rough sketch of the region of integration is required. Okay, is required. So in that case we can integrate first with respect to x or y, depend upon our choice. Okay, if you consider strip parallel to x axis, then integrate with respect to x first, then y. If you consider a strip parallel to y axis, then integrate with respect to y first, then x second time. Okay. So if we suppose strip is parallel to x axis, horizontal strip, then integrate with respect to x first and then with respect to y. Whereas if we suppose strip is parallel to y axis, then integrate with respect to y first and then with respect to x. Okay. So let us consider this very interesting example. Evaluate this double integral over a x y dx dy, where a is the domain bounded by x axis, ordinate x is equal to 2a and the curve x square is equal to 4ay. So we have given x axis, ordinate x is equal to 2a and this curve x square is equal to 4ay, and we have to evaluate this double integral problem. तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको बिना लिमिट्स के तो आप इवेल्युएट करो नहीं, ठीक है? तो लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका रफ स्केच बनाना बड़ा जरूरी है. ओके, तो देखिए एक्स एक्सिस ये तो क्लियर ही है, एक्स एक्सिस है, राइट? एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स के डायरेक्शन में 2a पर कहीं पे आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो. एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दैट वन इज ए पैराबोला, एक्स स्क्वायर even power of x, so symmetrical about y axis, so you will get this type of curve. Okay, so this x axis, right, this x is equal to a and this one is x square is equal to 4ay. Okay, and this point is L and coordinates are 2a. So this distance is a and this distance is 2a. Okay, so point of intersection is 2a. Clear? हमारे पास दो मेथड्स है. मैंने पहले कहा कि चॉइस है हमारी, अब चॉइस है क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट्स दे नहीं रखी हुई है, ठीक है ना? लिमिट्स को आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना? तो आप लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले स्ट्रिप की चॉइस करिए, राइट? सो लेट अस सपोज दैट this line x is equal to a parabola, this intersect this point, this figure shows the domain A, which is the area OML. Now let us suppose this problem. Okay, first way to solve this problem, let us suppose strip is parallel to y axis. Strip is parallel to y axis, this one strip is parallel to
y axis. Clear? From y1 to y2, from y1 to y2, y1 here is 0 and y2 lying over here, so y2 is x square over 4a. So lower limit y0 and upper limit x square over 4a. And then to cover this whole region of integration, right, this strip slide from this x1 to x2. Here x1 is 0 and here x2 is 2a. Clear? So let us suppose strip is parallel to y-axis. In this case, integrating first over a vertical strip PQ with respect to y from y is equal to 0 and y is equal to x square over 4a on the parabola, and then with respect to x from x is equal to 0 and x is equal to 2a. So this means that this double integral over a xy dxy is 0 to 2a, 0 to x square over 4a xy dy and dx. So these two limits are functions of y. So integrated with respect to y. So here we suppose a strip which is parallel to y axis, and then in that case these are the limits, and when you solve, okay, when you solve you will get a power 4 divided by 3. तो एक तो ये मेथड है, ठीक है. अब दूसरा मेथड क्या है? लेट अस सपोज स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब यहां बना के देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है. एक्स वाई विद strip is parallel to x axis, so with respect to x first and then with respect to y. ये बनेगा. If we consider this red strip, now from R to S, from x1 to x2, x1 is 2ay, 2ay under root. Clear? And here x2 is 2a, x2 is 2a. Now this strip slide from y1 to y2, right? y1 is 0 and y2 is a. अब देखिए ये दोनों प्रॉब्लम में लिमिट्स सारी की सारी चेंज हो गई हैं, ठीक है. तो आप जब ऑर्डर चेंज करोगे तो आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है. जब आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो बेसिकली आप करने क्या जा रहे हो? आप स्ट्रिप की डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हो. हियर स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट इन दिस केस स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Okay, now solve this inner integral, then outer integral. So 2ay under root 2a. Okay, when you solve this problem, okay, so 2ay under root 2a and this 0 to a, right? And when you calculate, you will get the same answer. Okay, so choice is your. Okay, you can consider a strip parallel to x axis or parallel to y axis. तो इस टाइप से आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स की आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है. कम से कम मिनिमम 10 प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है. वेयर लिमिट्स आर गिवन, सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट. Okay, and where limits are not given, just we have given region of integration, right? Then draw the rough sketch of the problem, right? And after this rough sketch, consider a strip. Maybe you consider that strip is parallel to x-axis or parallel to y-axis, right? And accordingly evaluate the limits, okay? And solve that particular type of problems. और जहां आपको रीजन दे रखा हुआ लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप दोनों मेथड्स, दोनों स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखा करो, ठीक है, कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट. तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो नेक्स्ट टाइम जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. उसमें क्या होगा, लिमिट्स आपको दे रखी होंगी और एक ऑर्डर उन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली फिक्स होगा, ठीक है. आपने उस ऑर्डर को वो करना है, चेंज करना है, ठीक है. अगर dy dx है तो उस ऑर्डर को लिमिट्स के अकॉर्डिंगली dy dx है तो उस ऑर्डर को dx dy करना है. तो देखिए जब आप ऑर्डर चेंज करोगे, ठीक है, तो लिमिट्स तो चेंज होंगी और लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको रफ स्केच बनाना पड़ेगा. तो वो प्रॉब्लम थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है, और कभी कभी इजी भी हो जाती है, ठीक है. मोस्टली वो कॉम्प्लिकेट होगी जब आप इस टाइप का ऑर्डर चेंज करोगे, क्योंकि लिमिट्स को देख करके आपको रफ स्केच बनाना है और रफ स्केच में जो स्ट्रिप प्रॉब्लम में दे रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेनी है. यानी कि ऑर्डर को चेंज करना तो स्ट्रिप की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर चेंज करनी पड़ेगी, राइट. एंड अकॉर्डिंगली
find out new limits of integration and then solve the problem, you will get the result. Okay, तो कुछ प्रॉब्लम इस टाइप से भी पूछी जाती है. इवेलुएट दिस डबल इंटीग्रल प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो आपने डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले ऑर्डर को चेंज करना है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, एंड दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय.